Hello everyone, welcome to Sri Krishna classes. Yesterday I taught you active and passive voice, simple present tense, simple past tense, how to convert them into passive voices. Today I am going to teach you how to convert present continuous tense into passive voice. Present continuous tense, when I taught you, I told you that is MR plus ing because constantly something is being done. So we are using ing, लगातार हो रहा है तो ing का यूज करते हैं हम. Now while converting it into passive voice, only one thing you have to keep in mind that you is MR will be used, is MR का यूज होगा. ing की जगह हम being लगा देंगे, वो भी हम verb में ऐड नहीं करेंगे. वर्ब तो हमको थर्ड फॉर्म में लेके आना है, हमेशा वो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा. जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी टेंस का करेंगे तो मेन वर्ब तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट पार्टिसिपल ओनली. आई एम टॉकिंग अबाउट विच हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू गिव इन पैसिव वॉइस. So you have to keep this thing in your mind that ing is being used in continuous tenses. Thus we are going to use being, being. तो ing से ing रिलेट कर देना, be लगा देना और आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा. पहली बात. Second point which you have to remember, that's why I have written ing will be converted into being. Future continuous tense will not be changed into passive voice because already will be going. जब हम future continuous tense लिखते हैं, आप मेरा वो पिछला वीडियो उठा के देखिए तो उसमें मैंने बोला will be going, they will be coming. ये already passive में जा रहा है तो इसको हम passive में change नहीं करते. तो पहले 2 points हमने सीखे. Now how to change it. Assertive sentences of present continuous tense. She is cooking food. So which is your main verb? Cook. ing जोड़ा, cooking food. Food is being cooked by her. Food is the object. क्या बना रही है वो? कल मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट का आंसर हमें कैसे मिलता है, क्या, किसी. तो वो क्या बना रही है? फूड बना रही है. तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर. शी, नाउ नेगेटिव. She is not cooking food. Food is not being cooked by her. Not has been applied. She is not cooking food. Food is not being cooked by her. Interrogative, is she cooking food? Same thing will be applied. Is food being cooked by her? Question mark. Interrogative negative. Is she not cooking food? Same thing, is food not being cooked by her? Food और being के बाद not आएगा, ये ध्यान रखना है. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. So many students ask that how to use why, wh questions, words to form questions, how many. अगर हम उसको यूज करते हैं, सिंपल आपको काम करना है, इसके पहले why लगा देना है. Why is she not cooking food? वो खाना क्यों नहीं बना रही है? So why is food not being cooked by her? So these rules are to be applied to change any kind of sentences into passive voice in continuous tense of present. Next thing, past continuous tense, how they are going to be changed into passive voice. Assertive, he was playing football. Football was being played by him. That day when I gave you a table, I told you he का object क्या है, उस table को देखिएगा तो him. Negative, he was not playing football. Football was not being played by him. Interrogative, was he playing football? Was football being played by him? Interrogative negative, was he not playing football? Was football not being played by him? Same term I have used here. Why was he not playing football?
Why was football not being played by him? Students always remember practice makes a man perfect. बिना प्रैक्टिस के कोई परफेक्ट नहीं बन सकता. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पॉइंट्स सिर्फ आपको दिमाग में रखने होते हैं. बिकॉज आई हैव discussed with so many students, they forget how to convert into passive voice. If the particular tense is to be converted into passive voice, तो ये थोड़े से टिप्स होते हैं. अगर आप अपने दिमाग में रख लें कि आईएनजी है, आईएनजी को हम जब कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में, तो बीइंग लगाएंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे बी में. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम अगर दिमाग में बैठा लें, we just keep it in our mind, we just recall whenever we are using these terms. Because in grammar exceptions are everywhere, exceptions हर जगह है ग्रामर में, लेकिन उसके जो रूल्स हैं, ग्रामर इज बेसिकली बेस्ड ऑन रूल्स, रूल्स पे डिपेंड करती है. सो try to follow this. Yesterday I gave you homework, I have given one exercise, I hope you would have done, those who are keenly watching, and I'm getting response from the student. So try to learn it, it's good, and it will enhance your grammar, it will enhance your understanding towards grammar, and I hope you will understand each and everything which is taught to you by here. Now, present perfect tense into passive voice. So, in present perfect tense, we already use third form of the verb. In active voice also, has or have. Has is used with singular number. Have is used with plurals. And third form of the verb is mandatory. Past perfect tense, had is there, and third form of the verb. Now, how to change them? You have to add been only. ओके आप हैज़ और हैव को लिखेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए, और आप उसमें बीन, आप इसको टर्म को ऐसे याद करते हैं, सपेरा क्या बजाता है, स्नेक चार्मर क्या बजाता है, बीन उसके पास होती है, बस आप उस बीन को यहाँ याद कर लीजिए. तो शी हैज़ कुक्ड फूड, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर. शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, फूड हैज़ नॉट बीन कुक्ड बाय हर. हैज़ शी कुक्ड फूड, हैज़ फूड बीन कुक्ड बाय हर. Has she not cooked food? Has food not been cooked by her? Why has she not cooked food? Why has food not been cooked by her? तो इस तरह से आप बीन बजाएंगे. बीन के टर्म को याद कर लीजिए कि आपको जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को या परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो आप बीन बजा देंगे और बीन का यूज़ करेंगे. देन पास्ट परफेक्ट टेंस, सेम procedure we are going to follow here. He had played football, football had been played by him. In negative, he had not played football, football had not been played by him. Interrogative, had he played football, had football been played by him. Interrogative negative, had he not played football, had football not been played by him. Why had he not played football? Why had football not been played by him? So one thing you have to keep in your mind while converting into continuous tenses into passive voice, you have to use ing. वहाँ यूज़ हो रहा है एक्टिव में, आप वहाँ ing बी के साथ जोड़ देंगे. प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को चेंज करने के लिए आप दूसरा टर्म अपनाएंगे, बीन याद कर लीजिए. तो हैज़ हैव प्लस बीन को ऐड करेंगे. यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं तो भी आप बीन को ऐड करते हैं. तो दिस सिंपल क्वेश्चन सो मैनी स्टूडेंट्स आस्क्ड इन द क्लासरूम ऑल्सो, मैम वाई हैज़ बीन, बिकॉज यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. हियर यू आर यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट देयर
आईएनजी का यूज़ होता है, तो दोनों टर्म अलग हैं, वो टेंस है और ये पैसिव वॉइस में आप चेंज कर रहे हैं. Hope you will understand. I'm not promising you that you can learn it within 30 minutes, you can learn it within 50 minutes. No. ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है पैसिव वॉइस समझने का, ये समझने वाली बात है. एंड बेसिक्स टू एडवांस व्हेन वी आर गोइंग, so it takes time. So it's time taking, and once you will understand, my aim is that students should understand grammar in a perfect way, and that I'm trying to do. I hope you would have understood. Thank you. Keep on watching. Thanks.